बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा रफ़ा का, बिलाल साहब का, जनरल लोधी का, कि आप मुझे इस काबिल समझते हैं कि मैं किसी फॉर्म में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। तो जो मुझे टॉपिक दिया गया, आपने जिक्र किया है, इसमें मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि बहुत ब्रीफली पहले मैं हिस्ट्री की बात करूँ, फिर मैं रीजन की बात करूँगा, फिर रीजन में जो तब्दीलियाँ आ रही हैं जो हमें अफेक्ट करती हैं उनकी बात करूँ, और सब्सिक्वेंटली मैं कुछ रिकमेंडेशन दूँ। हम सबको पता है कि पाकिस्तान की जो हिस्ट्री है, इट हैज़ बीन चेकर्ड एंड अ बिट abnormal. पाकिस्तान जो है, इट कैन बी डिफाइंड विद टू वर्ड्स, दैट इज टर्बुलेंस एंड रेजिलियंस. Every now and then we are at the crossroads of our history, unfortunately, because यहाँ पे एक्सटर्नल पावर्स के भी इंटरेस्ट रहे हैं, और विद इन पाकिस्तान एंड अराउंड पाकिस्तान भी मैं समझता हूँ कि हमें कॉन्फ्लिक्ट की ओवरडोज मिली है. हमारे अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट रहा है और हमारे इर्द गिर्द भी कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा रहा है. तो कॉन्फ्लिक्ट जो है वो किसी भी सोसाइटी में, किसी भी कंट्री को बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट करता है. और मैं कहना चाहूँगा कि जो हुआ है वो तो हम सबको पता है. वी आर अ वेल इन्फॉर्म्ड ऑडियंस. मैं फोकस करना चाहूँगा इफेक्ट्स के ऊपर, कि ये जो प्रोलॉन्ग्ड और ओवरडोज हमें कॉन्फ्लिक्ट की मिली है, इसका हमारे ऊपर असर क्या हुआ है. सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि फॉर 77 years वी हैव बीन अ सिक्योरिटी स्टेट, बिकॉज वी हैव डन नथिंग बट फाइटिंग. Half of the life of Pakistan has been wars, either our own wars or somebody else's war. Without going into debate कि वो किसकी जंग थी, but the reality is that half of our time we have fought wars. Security state में जहाँ के भी होगी वहाँ पे predominant role armed forces का होगा. So thus exaggerated role of armed forces जो भी हम observe करते हैं. We suffered human losses. मैं इस वक्त कहता हूँ कि there will be millions of houses in Pakistan which are abnormal. या वहाँ पे एक बच्चा शहीद होया हुआ है, या एक बेवा है, या एक बच्चे यतीम है. सो इस तरह की इन्वायरमेंट पे अगर हम एक सोसाइटी से एक्सपेक्ट करें कि वो एबनॉर्मल बिहेव करेगी तो वो मुमकिन नहीं है. वी हैड ह्यूमन लॉसेज, वी हैड कैपिटल लॉसेज, वी हैड सोसाइटल डिके ओवर पीरियड ऑफ टाइम, पर्टिकुलरली फ्रॉम 79 ऑनवर्ड्स टिल टुडे. इन लास्ट 40 years जब रशिया बहादुर आए थे अफगानिस्तान में, हमने परपेचुअल स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट देखी है. तो सोसाइटल डिके है, इरोजन ऑफ स्टेट ऑर्गन्स है, जो हम अभी कहते हैं कि जी यहाँ पे हमारे ऑर्गन्स जो है ना वो वेल मिच्योर नहीं है, और लॉस ऑफ नेशनल कैरेक्टर है. आई एम अराउंड 60 years, आई कैन वाउच कि 40 years ago माई सोसाइटी wasn't एज इट इज टुडे. देयर आर सर्टन सीरियस इशूज. एंड मैं ये भी कहता हूँ कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट की इन्वायरमेंट थी, जिसपे कि हमारे पास ईजी मनी आई और एक डिफरेंट तरीके से लगी, इसने एक ब्रीड पैदा की पाकिस्तान में. वो ब्रीड है अपॉर्चुनिस्ट की, वो ब्रीड है पावन्यूज की, नौदौलतियों की, वो ब्रीड है साइकोफेंट्स की. एंड द लास्ट ऑफ ऑल इज द लॉस ऑफ इंटेलिजेंशिया. वो इंटेलिजेंशिया जो थ्रू ड्रामा, थ्रू पोइट्री, थ्रू आर्ट स्टीयर करती है एक सोसाइटी को, वो मैं समझता हूँ कि वो वी हैव सफर्ड अ लॉस ऑफ दैट. अफगानिस्तान ने ज़्यादा सफ़र किया है, बिकॉज उधर तो 200 साल से ये लड़ाइयाँ चल रही हैं. हमने भी टू अ ग्रेट एक्सटेंट सफ़र किया है. यहाँ से अगर ट्रांजिट करूँ रीजन के ऊपर जिस पे कि पाकिस्तान रिजाइड्स, साउथ एशिया इज़ नोन टू बी द लीस्ट इंटीग्रेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड. हम लोग उसके रीजंस कुछ और हैं, वो बड़ी लंबी डिबेट हो जाएगी. ये जो कंट्री साउथ एशिया में भी नो कि सार्क का क्या फेट हुआ है बिकॉज ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट. We do around 5.6% trade within ourselves, within the region, and 94% or 95% trade with outside world. So this is the most impoverished region of the world. 500 million people are living below poverty line. This is the most conflict-prone region of the world. तो मैंने अपने PhD में एक चार्ट बनाया था, which was complete red, क्योंकि इतना ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट इस रीजन में रहा है. अब मैं शिफ्ट करना चाहूँगा ट्रांजिशंस के ऊपर, रीजनल ट्रांजिशन. वी नो कि ग्लोब इज ऑल्सो चेंजिंग, द पावर इज शिफ्टिंग फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, चाइना इज राइजिंग एज अ मेजर पावर, डॉलर इज द इन डिके एज अ ग्लोबल करेंसी. सो देयर आर मैनी ट्रांजिशंस व्हिच आर हैपनिंग एट द ग्लोबल लेवल, बट आई विल लाइक टू फोकस ऑन द रीजनल लेवल. देयर इज growing Indo-US strategic partnership, which is emboldening India, because India is being prepared to contest China. There is a visible US-Iran standoff. आजकल तो बहुत ज़्यादा heightened है उसके ऊपर.
And consequently, Iran has now signed a strategic partnership with China as well as Russia. It is only yesterday, I think, that they signed with Russia. Strategic significance of Pakistan and Afghanistan is re-emerging. And this is because the future energy lies in lithium, and it is transiting from fossil fuels to lithium. We know that fossil fuel के domain में Saudi had the greater significance, and Afghanistan is known as the KSA of lithium, KSA of lithium, because a lot of lithium is available here, which is the future. So for that reason, Pakistan and Afghanistan, because of the mineral and rare earth metals, दोबारा से significance आ रही है. CPEC is a project which has huge potential for Pakistan, but it also is drawing the conflict, because those powers which do not want to see Pakistan rising or China rising are contesting this project. South Asia is transiting from Indian centricity to Chinese centricity. And it is believed that Indian-centric South Asia was most conflict-prone, and Chinese-centric South Asia will be more growth and development-prone. And there's also talk of Greater South Asia. And Pakistan's security, Pakistan is transiting, or Pakistan's relevance is transiting from security relevance to economic relevance. Now coming to the third part, Pakistan's strategic interest. It has been alluded by General Lodi. In the 20th century geopolitics, that is the fight that we had against Soviet Union, followed by another fight that we had with terrorism, has played havoc with our society. The kind of prices that we have, if I give you only example of war on terror, Pakistan lost 123 billion and gained only 20 billion. And besides that, human loss, infrastructure loss, national character loss, those are beside this. We suffered, we sacrificed the most in the world, but still we are regarded the worst. The global players, they do not regard us. They do not honor our sacrifices, our suffering that we have had. Now, if we come to 21st century geopolitics, in which there are two new belligerents, that is United States and China. In this case, unlike the previous geopolitics cycles, we have clear choices. We can be in the right side of the room, we can be on the wrong side of the room. We can continue to do the same role that we have performed in the past geopolitical games, or we can change our role. That is our choice. So in my view, Pakistan needs to shift its strategic orientation from west to east. Once I do a cost-benefit analysis of our 7 decades long association of the West, there is a negative outcome, because we have gained less and we have lost more. This is my view, and it can be contested. Pakistan's future relevance, in my humble opinion, as far as the US is concerned, it bodes ill, and as far as China is concerned, it bodes well. CPEC, in my view, is a godsend opportunity, because it shifts us from the route of destruction, mayhem, and fighting to the route of growth and development. And Pakistan can become the pivot state of 21st century. Our founding father, Allah may bless his soul, said in 1948 that Pakistan one day will be the pivot state of the world. And today's authors like Andrew Kripko calls Pakistan as the pivot state of 21st century. It becomes the connected state of 3 major regions of Asia, that is South Asia, Central Asia, and West Asia. Now, as far as essentials for CPEC are concerned, what we need to do, one, that we have to have a clarity in our orientation. We'll have to decide that which way we want to go. And this was something that I submitted to General Bajwa back in 2019. In my view, we must wean away from the West. We have had enough. I was once at RUSI, which is London Royal United Services Institute, and a Britisher, he joked that we are worried that China may ride you. So I jokingly said that you have been riding us for 77 years, let them also ride. So the point is that we must wean away. Improve relations with our neighbors. जब चाइना ने BRI को आउटले किया एक बड़ा प्लान, उन्होंने रियलाइज किया कि जब तक हम अपने नेबर्स के साथ डिस्प्यूट्स को खत्म नहीं करते, हम नहीं कर सकते. तो 14 नेबर्स के साथ दे रिजॉल्व देयर डिस्प्यूट्स.
But we at the cusp of CPAC, we are having a strange relation with all of our neighbors. Pakistan House has to be put in order. We know what kind of agitation, what kind of frustration, what kind of troubles are here. And there has to be all-inclusive plans. There is a feeling that Punjab, being bigger province, gets the maximum share, and the smaller provinces, they do not get the sufficient share. There was another letter which was given to me regarding speaking or giving some recommendation on governance. So on that, I would say, this is the last part that I want to talk about, that the prolonged conflict has caused erosion of intelligentsia. And this intelligentsia or the mechanism to steer society in a particular direction, in my view, is missing. Our parliament is not that potent. What kind of discussions take place, what kind of arguments happen there, what kind of pursuits they follow, that we all know. So if we feel कि ये inadequacy है हमारी society में, so again, this is a recommendation which I had given to General Bajwa around 4 or 5 years ago, that we need to have a council of elders. Isn't it possible to have a score or 2 scores of elders who are not ambitious, who have played their innings, who are centrist, who are not left or right? They do not have their personal pursuits and they only work for Pakistan. And let me say that General Lodi is one of those elders who just thinks for Pakistan. He doesn't have his self-interest, that I will gain this or I will gain that. So क्या हमारे पास ये भी इतना काल पड़ गया कि हमारे पास 20-25 ऐसे लोग नहीं जिनका काम हो कि सोचें कि हम फ्यूचर जनरेशन को हम क्या देके जा रहे हैं, ये जो आज हम पॉलिसी अडॉप्ट कर रहे हैं इसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा. तो दे आर, आई वुड से कि दे आर नॉन बाइंडिंग, दे आर ओनली कंसल्टेटिव ग्रुप which can just advise certain things. So I think, और मैंने ये गूगल किया है, there are countries जहाँ पे council of elders हैं. Ghana is one of the countries, Malaysia is another country. There are countries जहाँ पे किस तरह की organs हैं. That's all that I had to say. Thank you very much for the opportunity. So nice of you.